And yes, we are live. Yeah. Hi everyone, welcome to our third episode of Life Talks by Spiritual Guide. I'm your host Shreya Vyas. I'm a counselor and hypnotherapist and working with iChas as a psychology intern. Today we have with us Swami Yatidharmananda and he's going to talk about in the conversation with Swami Yatidharmananda on his experience with the philosophy of Swami Chidananda Sevashram. Before we begin, I would like everyone who is watching us to feel free to ask any question to us in the comment section and we would surely answer them. You may also start a watch party on Facebook so that your friends and family may take a benefit from this. One line for organization that VITRUST focuses on helping psychologists, coaches, and trainers to develop advanced coaching and therapeutic skills. Let me give you a brief introduction about Swami Yatidharmananda. It gives me immense pleasure to introduce Guruji. Swami Yatidharmananda, in the year 2000, he received Sannyasa Diksha from his Guru. In 2003, he was given the task of updating the ashram in the digital domain by his Guru. Swamiji went on to design many books and also the website for the ashram. He established the audio-visual studio and library for the ashram, the Sivananda Ashram. In July 2012, he set out on his own and he founded Swami Chidananda Sevashram, a social spiritual organization dedicated to the life and teaching of Guruji. A monastery for the modern world where the people of all age and background can live on the principle and the practice of Ayurveda for body, yoga for the mind, and Vedanta for the soul. Swamiji also conducts a workshop on relaxation, meditation, sings Kirtan, and loves to share his life transformative time with Gurudev. तो आपका हार्दिक स्वागत है गुरुदेव इस श्रृंखला में हरिओम पहले तो मैं अपने आप को गुरुदेव नहीं कहता हूँ, वो जिनके बारे में आपने कहा उनका नाम है स्वामी चिदानंद जी महाराज शिवानंद आश्रम के. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ हिज and becoming a guru is a big responsibility, so I feel I am still a student. Thank you very much, Shreya, for organizing this. I'm very happy and very honored to be associated with people like you who are working in the field of mental health. And it has been also my favorite line of work. It's been more than 15-16 years, not as a professional because I'm not trained as a psychologist like all of you, but our Vedanta talks about nothing else but mental health and awareness. So very happy to be useful this way. Thank you so much. Thank you, and my greetings to everybody who are here watching us live. And I hope I'm useful. Yes, yes. So before moving ahead, I would also like to share the purpose of this webinar. So in the world we are living today, spiritual groups are the major source of support system for the people, both in the journey of discovering themselves and when they are facing any issue, for example, any emotional issue. Having said that, they are not a replacement of visiting a mental health practitioner. तो आज ये सेमिनार के दो पर्पस हैं. पहले तो ये कि ये सारे डिस्कशन हमें हेल्प कर सकते हैं कि which kind of meditation practice or spiritual practice we can follow, and also the second purpose is that we also want to know the opinion of spiritual leader on mental health. So shall we start with our question? Yes. Yes. Hi Nitin, hi Misbah. Okay. So my first question is that we would love to know more about you and your spiritual journey into the spiritual domain. So can you please throw some light on how you get introduced to the spiritual group? Yeah. So that is all I have to say, because I am more comfortable in talking about what has happened and how this whole transformation took place. So this body, I was born in Orissa,
to a very spiritual family. My father was already a disciple of my Guruji, Swami Chidananda Maharaj of Sivananda Ashram Rishikesh. So spirituality, religion was very much part of growing up. But as a child, I was very inquisitive, very curious, and I had millions of questions, which got me into trouble with everybody around me. And so I don't know where it came from, but I remember when I was 8 years old, the first question I asked when I was, going to the temple for evening aartis or morning aartis. Being born into a Hindu family, this is part of our life. So the temple that we used to go to had a very huge bell, a big size bell, and it used to make a lot of sound. So and I'm very sensitive to sound, so that loud noise of the bell would always give me headache. And I would always ask this question, that why do we have to ring the bell so hard in the temple? So ये हम इतना जोर जोर से हम क्यों बजाना है? क्या क्या पर्पस क्या है? तो ये क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन है लाइफ का, जो कि मुझे बहुत ट्रबल में डाला. आई गॉट इनटू सो मच ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ से मेरी आप स्पिरिचुअल जर्नी कहो या इस पाथ का कहो, शुरुआत यहीं से हुआ. फिर जब लोगों से पूछा तो सबने कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछते, बस बजाते हैं. तो मेरा मन नहीं माना. मैंने बोला नहीं, हमारा ये, मैंने पढ़ा था बहुत, सुना भी था घर में पिताजी से और बाकी लोगों से, कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, बहुत एंशियंट है, और अगर इतना हजारों सालों से लोग किसी चीज को कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा. देयर मस्ट बी सम अंडरस्टैंडिंग. और मुझे मेरे पिताजी से बहुत डर लगता था. आजकल जैसे फादर एंड चिल्ड्रन के बीच में जिस तरह के फ्रेंडशिप टाइप का माहौल है, उस समय में ऐसा नहीं होता था. आई एम टॉकिंग ऑफ द अर्ली 80s. तो Yes. पिताजी को बहुत डर लगता था, तो उनसे कुछ पूछने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती, तो मैं बाहर पूछता था. जवाब बहुत मिले, बहुत तरीके के जवाब मिले, पर मेरे को वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. आई डिड नॉट फील सेटिस्फाइड कि ये हो सकता है. तो आई वाज लुकिंग फॉर मोर लॉजिकल एंड मोर एनालिटिकल, जो कि मैं थोड़ा साइंटिफिकली समझना चाह रहा था. सो इस तरह से मेरी ये क्वेश्चनिंग चालू हुआ, जिसका धीरे धीरे नेगेटिव इम्पैक्ट होता रहा कि अ, लोग, या तो लोगों को पता नहीं था, इसलिए उनको इनसिक्योर फील होता था, तो वो क्वेश्चंस को दबा देते थे, या फिर कोई और कारण होगा जो मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन मुझे कभी उत्तर नहीं मिला. हमेशा बोलते ये सब सवाल नहीं पूछते, चुप करो, क्या पूछते हो, इस कोई सवाल है? मंदिर में आरती में घंटी बजाते हैं, बस ये हो गया, मैटर एंड हो गया. So that why was never encouraged, or nobody could. Maybe I was a little different than most of the kids of my age. So किसी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा था. So मेरे अंदर एक मतलब क्या बोलते हैं, रेबेलियसनेस आया कि जब तक मुझे समझ में नहीं आता तो मैं इसको नहीं करना चाहता. तो मैंने रिएक्ट करना शुरू किया. मैंने बोला कि नहीं, अगर मुझे मंदिर मत ले जाओ. आप मुझे ले जाते हो, मेरे को सरदर्द होता है, घर में आता हूँ, होमवर्क नहीं कर पाता हूँ, तो फिर सब लोग मुझे मारते हो कि अरे बदमाशी करते हो, पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, बहाना बनाते हो. So this was the challenging time I had as a kid, and I had all my complaints, all my anger was pointed at the bell और all the other rituals कि यार मुझे ले जाते क्यों हो, परेशान मैं होता हूँ और फिर मुझे मार पड़ती है. So so I set out on my own research, अपने तरीके से फादर की किताबों में पढ़ना और बुक्स में ढूंढना, लोगों से पूछना, पर कोई साइंटिफिक लॉजिकल आंसर्स नहीं मिले. सो क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था आंसर से, तो मेरे अंदर फेथ जो है, जो पेरेंट्स ने दिया, जो एक अपब्रिंगिंग से आपको मिलता है ना, यू गेट ऑटोमेटिकली लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, फ्रॉम योर ग्रोइंग अप. तो वो सबको धीरे धीरे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया. बोला नहीं, मैं जब तक मुझे साइंटिफिक आंसर्स नहीं मिलते, मैं कोई चीज नहीं मानना चाहता. सो फिर ये बहुत बड़ा क्लास शुरू हो गया, बिकॉज उड़ीसा गुजरात दोनों बहुत ही
रिलीजियस और बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत भाव है लोगों में यहाँ पे, भक्ति बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो भक्ति वाले स्थान पर आप अगर नास्तिक जैसा क्वेश्चन पूछोगे तो यू कैन इमेजिन प्रॉब्लम कैसा होता होगा। सो Yes. बहुत रिजेक्शन हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, सोशली ऑकवर्ड हो गया। फिर वो उस समय में एज ए टीनेजर मैंने बोला नहीं, ये मैं, दिस कैन नॉट बी माई रिलीजन, दिस कैन नॉट बी माई फिलोसफी, बिकॉज हजारों सालों से लोग कर रहे हैं, मंदिर में घंटी पीट रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, लेकिन पूछ रहा हूँ भाई क्यों करते हो, तो कोई बता नहीं पाता है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये आई विल मे बी व्हेन आई ग्रो अप आई विल फाइंड माय ओन रिलीजन और आई विल फाइंड माय ओन पाथ, बट दिस कैन नॉट बी माय पाथ व्हिच डजंट हैव ए अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो मतलब मैं इसको नहीं करूंगा। सो धीरे धीरे मैं अपने आप को नास्तिक मानने लग गया कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। और क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी था और मैं पढ़ता बहुत था, तो काफी कुछ किताबें पढ़ लिया, बहुत कम। बाय द टाइम मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैंने उस समय में ओशो को पढ़ लिया, जे कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया, बहुत सारे फिलोसफी की किताबें पढ़ ली। तो क्या होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कुछ भी पढ़ते हो तो वो क्या है, फिर मेरे पास में उल्टे सवाल बहुत हो गए थे, मतलब आई हैड वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस टू आस्क पीपल एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्रबल फॉर पीपल। सो मेरे आज भी लोग बोलते हैं कि मेरे घर जहाँ पे मैं बड़ा हुआ कटक में, तो मेरे घर के आसपास में जितने मंदिर थे और वहां के जो पंडित लोग थे, अगर वो मुझे सामने से आते हुए देखेंगे ना तो वो गली काट के चले जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि पागल है, पता नहीं क्या सवाल पूछेगा और हमें परेशान कर देगा। सो आई माय रेपुटेशन हैड बिकम लाइक दैट एज ए टीनेजर। तो मैं पूछता हूँ, अच्छा भगवान को देखे हो, साबित कर सकते हो भगवान है, मतलब इस तरह का। Yes. I और understand. फिर उल्टे टाइप के, जैसे बहुत एक फेमस, मैं आज आई फील अशेम्ड कभी कभी इस बारे में बात करते हुए, एक बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का, जो कि महाभारत में स्टार्टिंग में चलाते थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा करके श्लोक है। मतलब देखिए, जब जब Yes. धर्म में ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो मैं मतलब अ, बिल्कुल इसको इंस्पिरेशन नहीं लेना है। ऑल माय व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट टेक दिस एज एन इंस्पिरेशन बिकॉज दिस इज a totally wrong point. But what I'm trying to say is, as a child at the time, I led myself into thinking like this. So my education became a point of getting back at people, asking, insulting them or humiliating them कि मैं बहुत जानता हूँ और मैं, मेरा सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकते, मेरा ऐसा एक एटीट्यूड हो गया। तो मैं उनको बोलता हूँ, मतलब क्या भारत में हम लोग इतना पाप करते हैं क्या, भगवान को बार बार बेचारे अवतार लेके आना पड़ता है, बाकी दुनिया में पाप नहीं करते लोग, ये भारत में क्यों भगवान इतना अवतार लेते हैं, मतलब तो इस तरह का माइंडसेट हो गया था मेरा। सो मैं बिल्कुल नास्तिक हो गया था। ओनली आई डिड नॉट टेल दैट आई एम ए नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, बिकॉज मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं उसको अपसेट नहीं करना चाहता था। मैं उनको मंदिर ले जाता था, ले आता था, लेकिन वो बचपन में फिल्म देखा था अमिताभ बच्चन की दीवार, उसमें वो दरवाजे पे खड़ा रहता था, मैं भी वैसे ही करता था, मंदिर के बाहर खड़ा रहता था और माँ मंदिर से आती थी तब आता था, ऐसा हो गया था। So ये सब चल, Interesting. anyways, this was how it started, but it Yes. became negative because uh, जो आसपास के लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उनको पता नहीं था, या फिर उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा ये करो तो उन्होंने किया, तो उन्होंने कभी सवाल पूछा नहीं था। तो जस्ट बिकॉज के मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे ठीक मेरे तरीके से नहीं मिला, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, जबकि कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं था, कॉन्सेप्ट का एसेंस है, वैल्यू है। Yes. लोग जो मेरे को मुझे मिले, those people who met me, I came across, they did not know how to answer my question. So because of their that limitation, I rejected the whole concept and I said I don't believe in God. Anyways, to cut, come back. So then finally life went in its own way, and my father was very spiritual, so he decided that now he is retired, उनकी obligations जो है family की, और daughters got married, sons business में settle हो गए, and I was in my 10th, 12th, तो उसके बाद मुझे भी बिजनेस ज्वाइन ही करना था, तो उन्होंने बोला कि मेरा काम हो गया, now I want to take sannyas and go and serve in the ashram. So father took sannyas and left
he didn't take my permission, so I became even more angry. And I was upset that फिर हमारे थोड़ी सी family में, because you know when your head of the family suddenly leaves, and my brother had just taken over the business, so a lot of things went wrong, and we, you know, from a very high financial status, we crashed down to a very difficult time. सो ऑल वो सब, ये सब फ्रस्ट्रेशन तो चल रहा था, साथ में ये सब जुड़ गए, तो ऑल ड्रीम्स ऑफ, you know, going abroad and making it big in America, you know, earning a lot of money, that was the goal at the time. The goal was to go to America, make the big American dream, and become a millionaire and come back and build a big house, have a fancy car, like every person Yes. dreams of. So वो सब गड़बड़ हो गया, तो so all my frustration, anger was pointed at my father and my Guruji, जो जिनके साथ मैं जुड़ गया बाद में. So मैं इतना नेगेटिव हो गया था at that time. I was literally angry, upset, abusive, and I felt that these two people have ruined my life, and they are responsible for my you know, failure in my career. सो ये होने के बाद में फिर लगा कि मेरे पास इतने क्वेश्चंस है जिसका कि आंसर कोई नहीं दे पाते. सो मैंने ये सोच लिया इन माय इगोइस्टिक वे दैट मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगा, उनको सारे डिफिकल्ट सवाल पूछूंगा, और वो बोलेंगे नहीं बता पाएंगे, तो उनको बोलेगा यू डोंट नो एनीथिंग, सो यू बेटर सेंड माय डैड बैक होम, क्योंकि उनके वजह से, उनके आने के वजह से मेरा सब लाइफ का, कैरियर का खराब हो गया है. लेट हिम कम एंड फिक्स ऑल दिस मेस, एंड मुझे बस अमेरिका जाना है. So my yeah, idea, imagine I'm 15-year-old, and with this idea, I went to Rishikesh to meet my Guruji Swami Chidananda Sevashram Ashram, who was born in 1916. So जब मैं गया तो he must be in his late 70s or 80s. तो मैं जाके उनको उनको मिला, और अच्छा, जब थोड़ा फेथ होता है, थोड़ा डिवोशन होता है, तो थोड़ा फियर ऑटोमेटिक आता है. एंड इट्स अ पॉजिटिव फियर, इट्स नॉट अ नेगेटिव फियर, इट्स अ पॉजिटिव फियर. श्रद्धा है तो थोड़ा फियर है. तो मुझे तो श्रद्धा था नहीं, मैं तो उनके पीछे बहुत बोलता था, क्या माय फादर being an engineer, being a successful businessman, and my dad was a very famous magician. You know, we used to perform magic on stage. I was also a magician. For in my younger days, I would perform magic, and I would show, entertain people on the stage. I was on the stage since I was 9-year-old. So you know, all that was there. तो मैं सोचता था, ये बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़े? Why is he running after all these sadhus and monks, and what's wrong with him? ऐसा हो गया था. जब बड़े हो गए ना, तो you obviously, you know, you try to Yes. talk about parents with your friends in an openness. So I used to talk like, yeah, there's something wrong with my dad, because why is he running after these swamis and these babas, and what is there? I mean, like that. So मैं ये आइडिया के साथ में गया और मेरे गुरु जी से मिला. तो बहुत सारी बातें वो मैं काटना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है. तो मेरा जो पहला कन्वर्सेशन, 1-to-1 कन्वर्सेशन, मैं बचपन में उनको मिला हूँ, क्योंकि वो हमारे घर आए हैं. जब वो आते थे तो हम लोग उनके साथ जाते थे शहर से शहर. मेरे फादर उनका प्रवचन सुनने जाते थे, सेवा भी करते थे. माय फादर वाज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, सो ही गेव अस लॉट ऑफ गुड वैल्यूज, बट एट दैट टाइम समझ में नहीं आ रहा था. अब समझ में आ रहा है कि हाउ लकी आई वाज टू हैव सच ए स्ट्रांग अपब्रिंगिंग, जिसकी वैल्यू उस समय नहीं समझ में आया, आज समझ में आता है. एनीवे, तो जब मैंने उनसे, मुझे मौका मिला सवाल पूछने का, तो मैंने उनको पहला सवाल ये पूछा कि स्वामी जी, मेरा बचपन से एक बड़ा दुविधा है, जिसको पूछ के मैं बहुत मार खाया हूँ, बहुत लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है, वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. एंड ही सेड, यस, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. मैंने बोला, स्वामी जी, ये जो मंदिर में आरती होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे कोई साइंस है कि ये सिर्फ एक इमोशनल डिवोशनल प्रोसेस है, जो कि यू नो जस्ट मेक्स यू फील गुड? आप भगवान के सामने खड़े हैं, मंदिर में पूजा हो रहा है, आरती कर रहे हैं, घंटे बज रहे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, और वो फायर ऐसे वेव करते हैं आरती भगवान जी की ओर. तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ, सब हमारे जो, वो कभी ना बहुत कम बार बोलते हैं हिंदू धर्म बोलते हैं, वो तो हमारे सनातन धर्म बोलते थे, या फिर हमारे वैदिक कल्चर बोलते थे. क्योंकि अगर आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे, हिंदू टर्म जो है ना, ये हिस्टोरियन ने हमको दिया है.
हिंदुइज्म करके कोई रियल Yes. एसेंस है नहीं। हमारा कल्चर को सनातन धर्म बोलते थे, जिसका मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आया। और या तो फिर वैदिक कल्चर बोलते हैं, वैदिक विजडम बोलते हैं, क्योंकि हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष के बाद शुरू नहीं हुआ। ये पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, किसी को पता नहीं है। सब जो भी वेद है वो सन्यासियों का, ऋषियों का मेडिटेशन में, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में विजन से आया हुआ नॉलेज है। इसको किसी ने लिखा नहीं है। तो वो बोलते थे कि हमारे जो एंशियंट सिविलाइजेशन का जो वैल्यू सिस्टम था, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, वैदिक नॉलेज कहते हैं, उसके हिसाब से हर वो रिचुअल, हर वो कस्टम के पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। ऐसा कोई इलॉजिकल थिंग नहीं है जो कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में है। आज क्या प्रैक्टिस हो रहा है उसकी बात नहीं करते थे वो। हमेशा बोलते थे कि लेट अस गो बैक टू द रूट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि उसका एसेंस क्या है। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला प्लीज एनलाइटन मी, बिकॉज मैं तो इतना पूछ पूछ के परेशान हो गया। 8 साल की उम्र में, अब 15 साल का हो गया। और उनका एक तरीका था कि ही वुड ऑलवेज से आप कुछ सवाल के लिए सवाल पूछते। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली पूछा, एंड इट इज वेरी रेलेवेंट टू व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा फर्स्ट कन्वर्सेशन वाज अबाउट माइंड एंड अबाउट साइकोलॉजी। इमेजिन माय ट्रांसफॉर्मेशनल कन्वर्सेशन, मुझे जहां पर मुझे हिंदुइज्म, हमारे मंदिर, हमारी वैल्यू सिस्टम जो मुझे मिला मेरे कल्चर में, जिसको मैं इलॉजिकल कहता था, और जिस कन्वर्सेशन ने मुझे उसमें चेंज लाया, वो कन्वर्सेशन वाज ऑल अबाउट माइंड एंड साइकोलॉजी। सो उन्होंने मुझे सीधा पूछा, डू यू नो हु इज सिगमंड फ्रॉइड? मैं उनको पूछ रहा हूँ मंदिर के आरती में कोई लॉजिक है क्या, और वो मुझे पूछ रहे डू यू नो हु इज सिगमंड फ्रॉइड। मैं मन में सोचा था कि यार, मंदिर की आरती और सिगमंड फ्रॉइड में क्या कनेक्शन। एनीवेज, वो माइंड में क्वेश्चन था, मैंने उनको पूछा नहीं। मैंने बोला, एज फार एज आई नो, सिगमंड फ्रॉइड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फिर उन्होंने बोला कि डू यू नो हाउ ही मस्ट हैव कम टू दीज फाइंडिंग्स। मैंने कहा कि ही स्टडीड पीपल हु वर अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी। उनका पैटर्न स्टडी किया होगा, स्टैटिस्टिक्स लिया होगा, रिसर्च किया होगा, फिर उन्होंने कोई मॉड्यूल बनाया होगा। मैं इतना डिटेल में तो जानता नहीं, मैंने ऐसे ही वेग आंसर दिया, यस करेक्ट। सो सिगमंड फ्रॉइड स्टडीड a group of people who were mentally unhealthy। उसको स्टडी करके उन्होंने कुछ निकाला। बोला बट हमारे जो एंशियंट सभ्यता है, और उन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा हर वो सभ्यता जो पुराने लोग थे, उनका जो मेंटल माइंड को स्टडी करने का तरीका था, दे स्टडीड देयर ओन हेल्दी माइंड। दे डिड नॉट गो टू स्टडी someone's unhealthy mind. So the eastern study of the mind and the western study of the mind में यही फर्क है कि ईस्ट में, हमारे यहाँ भारत में, लोगों ने मेडिटेशन किया, लोगों ने नेचर को ऑब्जर्व किया, और उस स्टडी के थ्रू उन्होंने माइंड के एबिलिटी को समझा, और उन्होंने कोशिश किया कि कैन वी टेक आवर माइंड फ्रॉम अ ग्रॉस लेवल टू ए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये करते करते मेडिटेशन ने उनको हाइटेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, उनको माइंड का मिस्ट्री, माइंड का कंट्रोल, माइंड की अंडरस्टैंडिंग आया। सो ये उन्होंने समझाया मुझे कि आवर एंशिएंट पीपल, दे स्टडीड देयर ओन हेल्दी माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइंड, हाउ डज इट वर्क। Very, very beautiful answer. So then what was their study? That mind is external in nature। मन हमेशा बाहर भागता है, आपका भी भागता है, मेरा भी भागता है, बुद्ध का भी भागता था। और आज दुनिया में एक जो है, एक मेडिटेटर है जिनको टेस्ट किया गया कि जिनका माइंड उल्टा, सब वो डायोड ट्रायोड जो भी है, मुझे पता नहीं, ज्यादा आप लोग समझेंगे, वो सब टेस्टिंग किया गया। 97% कामनेस, ही वाज फाउंड टू बी 97% टाइम्स काम। उनका भी मन भागता है, मन सबका भागता है। तो हाउ डज द माइंड गो? हमारे वेदांत या हमारा साइंस कहता है, एंशिएंट साइंस कहता है कि मन मन के पास अपने आप भागने की ताकत नहीं है। मन इंद्रियों के माध्यम से भागता है। माइंड रन्स थ्रू दी सेंसरी ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स। तो एग्जाम्पल दिया स्वामी जी ने कि आप
आपके घर में बैठे हो और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपके बगल वाले घर में नेक्स्ट डोर किचन में कोई नॉन वेजिटेरियन फूड बनता है, तो उसका स्मेल जैसे ही आपके नाक में आता है, your mind is no longer here in your room. Your mind is in that next door kitchen. मन वहां चला जाता है, अरे वो बन रहा है। अगर वेजिटेरियन है तो खीर बन रहा है या कोई बहुत फ्रेग्रेंस चीज बनता है, माँ बना रही है या पड़ोस में बनाता है, तो मन वहां चले जाता है। सिमिलरली कोई बहुत जोरदार नॉइज आया तो हम साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मन हम जहाँ हैं वहां से नहीं रहता है, मन वहां भाग जाता है। तो ये माइंड का बेसिक नेचर है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड, इज टू गो आउटवर्ड एंड थ्रू द फाइव सेंसरी ऑर्गन्स। अब इन्होंने जब ये स्टडी में ये उनको समझ में आया, तो लगा कि मन तो हमेशा भागता रहेगा, फिर हम माइंड को एक जगह में फोकस कैसे करेंगे? हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर फोकस नहीं है तो नहीं हो पाएगा। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में अगर फोकस नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी। अगर स्पोर्ट्स में है तो वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मन तो भागेगा, कभी ना कुछ स्मेल आएगा, कुछ ना कुछ साउंड आएगा, हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। फिर उन्होंने बहुत सोच सोच के एक ये कॉन्सेप्ट बना दिया। अभी मैं मंदिर का सिचुएशन में ले आया उन्होंने फिर मुझे, कि अभी आप इमेजिन करो, आप मंदिर में हो, मंदिर की आरती में हो, आप भगवान को मानते हो, वहां पे प्रे करने के लिए गए हो, और आप मंदिर में खड़े हो, और उस समय में आपका फेवरेट डिश कहीं बगल में बनना शुरू हो गया आसपास। आपका मन वहां मंदिर में थोड़ी रहेगा, वहां चला जाएगा। आपका फेवरेट मूवी का गाना बजना शुरू होता है, तो आपका थोड़ी मन रहेगा वो आरती में। आपका मन तो वो अमिताभ बच्चन है या जो भी आपका फेवरेट हीरो है या जो भी वो सीन है, वो माइंड में आ जाता है। तो ये आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ ये होने वाला है। तो हाउ डू वी स्टॉप दिस? तो उन्होंने ये मेथड डिवाइस किया कि चलो एक एक ऑर्गन्स को लेते हैं। स्मेल, अगर हम स्मेल को ही ब्लॉक कर दें, हम कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि बाहर से कोई भी स्मेल इतना ओवर पावरिंग ना हो। साउंड, हम कोई ऐसा साउंड क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि बाहर का साउंड कोई ओवर पावरिंग ना हो। सो इसीलिए आप देख लो, वेरी, अब ये मंदिर की आरती का घंटा क्यों बजाना है, अगरबत्ती क्यों जलाना है, उसका स्ट्रेट आंसर आ जाता है कि इसीलिए मंदिर में इतना जोर जोर से, खाली घंटा नहीं, वहां ड्रम्स भी बजते हैं। आजकल तो मैकेनाइज हो गया, मंदिर में जाएंगे तो एक मशीन मिलेगी आपको, मशीन Yes. ड्रम भी बजाता है, और सब तरह का साउंड होता है, फिर घंटे लोग पीटते रहते हैं। वहां पे इतना साउंड क्रिएट होता है, अब बाहर का कोई भी साउंड आपको पहुंचेगा नहीं। नो अदर साउंड कैन रीच यू, सो योर ईयर्स आर ब्लॉक्ड। एंड वो अगरबत्ती इतना जलाते हैं, एक इंसेंस के स्टिक नहीं जलता मंदिर में, पूरा पैकेट जलाते हैं ताकि वो स्मेल बहुत ओवर पावरिंग हो जाए। सो साउंड ब्लॉक हो गया, स्मेल ब्लॉक हो गया। फिर आप मंदिर में भगवान की ओर देख रहे हैं, तो वहां पे मूर्ति है, वो सजावट है, वहां सुंदर सुंदर कई सारे कपड़े लगाते हैं, फूल लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो आपकी आईज वहां पे फिक्सेटेड हो गया। एंड देन वो आरती का मूवमेंट भी बहुत पैटर्न्स बनाता है, तो योर आईज आर ब्लॉक्ड देयर, योर विजन इज ब्लॉक्ड देयर। फिर आप मतलब ताली बजाते हो या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, तो और आप थोड़ा डिस्टेंस में खड़े होते हो, तो टच का कोई ऑप्शन नहीं रहा। फिर आप कुछ मंत्र बोल रहे हो, तो सारे फाइव ऑर्गन्स ब्लॉक हो गए। अब मन के पास कोई चॉइस नहीं है बाहर जाने का। So mind is automatically focused on that particular moment, whether you know it or not, whether you like it or not, whether you understand it or not. आप एक बार मंदिर में पहुंच गए, your mind is automatically there, one pointed. Yes. Unless you yourself take the mind out, nobody can help you. तो ये जब आंसर मुझे दिया गया, so I was like, wow, why did someone did not tell this to me when I was asking this question at the age of 8? अगर मुझे ये 8 साल की उम्र में समझा दे जाता, तो मैं इतना नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं करता, इतने सारे नेगेटिव लेयर्स मेरे माइंड में, मेरे साइकी में नहीं डालता, और मैं अपने कल्चर को और बेटर समझ पाता, एंड देन आई वुड हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। सो मुझे बहुत टाइम लग गया इसमें। सो सो देन आई
I became very happy and I also became very sad when I got this answer. I said that means आंसर्स है. आज तक मैं ये सोच रहा था कि हमारे धर्म का कोई आंसर है नहीं, लेकिन आंसर्स है, जस्ट दैट पीपल डोंट नो. Yes. सो मेरे अंदर एक वो उन्होंने उस समय ये सीड डाल दिया कि just because you don't get the answers, just because people around you or the system that has been developed around you doesn't make sense, that doesn't give you the authority to reject any concept. Without doing your own research, without trying to find out what must have been the root cause or what must have been the original concept. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमें आज की पीढ़ी को, आवर एज ग्रुप और एज ग्रुप, हमें ये बहुत समझना पड़ेगा कि हम जजमेंटल हो जाते हैं. कोई कुछ गलत कर देता है, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे मॉस्क में हो, चाहे हमारे वर्क प्लेस में हो, हम जजमेंट कर लेते हैं और हम रिजेक्ट कर देते हैं उसको. एंड दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो ये मेरे फाउंडेशनल, जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे, कि ये मेरा फाउंडेशनल जर्नी था कि यहाँ से शुरू हुई. फिर मुझे लगा कि आई वॉज लकी टू बी बॉर्न इन टू ए वेरी spiritual family, a religious family, very value oriented family, very kind hearted people, wonderful people. मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे अच्छी वैल्यू सिस्टम दिया, अच्छी अच्छी परवरिश बोलते हैं ना हम, अपब्रिंगिंग दिया मुझे. बट फिर भी मैं भटक गया. मतलब आई आई यूज्ड टू कंसीडर माई सेल्फ एज ए नॉन बिलीवर ऑफ गॉड. आई अंडरस्टैंड. और वो एक एक्सपीरियंस ने आपके सारे जो भी थे लेयर्स, जैसे आपने कहा कि वो एक एक्सपीरियंस, एक आंसर ने जो अभी तक के जो लेयर्स बने थे वो लेयर्स को खत्म कर दिया. वेरी खत्म कर दिया. तो फिर हाँ, सो मुझे लगा कि अगर मैं having all this benefit of good parents, good understanding, good value system, if I could, go astray, I say, I like to use this word called astray. If I could go away from the path, or I could, become a negative person, what about millions of youth जिनके पेरेंट्स को ही वैल्यू सिस्टम पता नहीं है, या जिनको कुछ पता ही नहीं, बताया नहीं गया है, जिनको कुछ मिला नहीं है. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, मतलब आई एम जस्ट स्टेटिंग ए सिचुएशन. तो उनका क्या हालत होता होगा? डोंट दे डिजर्व टू नो कि यार रिजेक्ट मत करो, ट्राई टू फाइंड आउट. देयर मस्ट बी सम लॉजिक, देयर मस्ट बी सम अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इतने सारे वैल्यू सिस्टम. एंड दिस इज अक्रॉस सिविलाइजेशन, दिस इज अक्रॉस रिलीजन, जो मुझे लगता है. सो देन दैट बिकेम माय पैशन. आई स्टार्टेड फीलिंग वन विद द यंगर जनरेशन कि यंगर जनरेशन के सामने सबसे ज्यादा चैलेंजेस है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें हमारे रूट्स को समझना बहुत जरूरी है. yes. And और after ऑथेंटिक listening to रूट्स को this, समझना, ऑथेंटिक रूट्स को समझना. सॉरी, यस, यू आर सेइंग. yes. So after listening to this beautiful story, like I'm more curious to know the core principle of this philosophy. Like, can you share some of the core principle of this philosophy that you follow? सो लेट मी टेल यू वन थिंग. तो हमारा जो हम बेसिकली वेदांत कहते हैं उसको. वेदांत मतलब जो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेदास. तो वेदांत को हम फिलोसफी भी मान सकते हैं. मेरा कोई नया फिलोसफी नहीं है, Yeah. और एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कोई नया फिलोसफी क्रिएट नहीं कर सकते. हमारे संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, काफी लोग जानते होंगे, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. इसका मतलब वो ये कहते हैं कि देयर वाज अ होल, एंड व्हेन यू टेक आउट समथिंग फ्रॉम दैट होल, what you have taken out is also whole, and what stayed behind is also whole. So मतलब ये जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, ये इसमें हम कुछ नया फिलोसफी क्रिएट नहीं कर सकते, सब कुछ बता दिया गया. यस, विद टाइम्स चेंजिंग, विद एवोल्यूशन हैपनिंग, लोग पैकेजिंग बदल देते हैं, लोगों को समझाने का तरीका अलग बदल देते हैं. सो मैं ये रादर आई विल लाइक टू पुट इट दिस वे दैट this comes from our Vedic culture, our Vedas, our Vedanta, which is very very scientific, very very scientific. There is no
देयर इज नो हैंकी पैंकी, देयर इज नो इलॉजिकल थिंग। जो भी इलॉजिकल हमको लगता है, जितने भी लोग हैं दुनिया में जो कि समझते हैं कि ये तो अरे मैं तो नहीं मानता, ये तो बेकार की बात है, लोगों ने बना दिया। आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जो एग्जिस्टिंग है, we must do our own research to find out what must have been the original concept. Just like I gave you this example of मंदिर में घंटा क्यों पीटते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, क्योंकि Yes. उनको पता नहीं था, मैंने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जब पता लग गया, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो गया। अब कोई मुझे कुछ भी बोले, मैं बोलूंगा भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। Yes. तो बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, दैट ये जो फिलोसफी है, वेदांत फिलोसफी है, ये हमें एनकरेज करता है दैट वी मस्ट सीक, वी मस्ट इंक्वायर, वी मस्ट आस्क, वी मस्ट ट्राई टू गो बैक टू द रूट्स। सो मैं मुझे थोड़े दिन पहले एक ऐसा, हम लोग सब लोग आजकल इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट टैगलाइन। सो मुझे एक टैगलाइन बनाना पड़ा, क्योंकि किसी ने कहा नो यू हैव टू मेक टैगलाइन। सो मैंने ये कहा कि वी मस्ट इंक्वायर, एक्सप्लोर, engage, and then we evolve. So इंक्वायरी, राइट इंक्वायरी होना चाहिए, और हम एक्सप्लोर करना चाहिए। हम जस्ट सब चीज ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और इगोइस्टिकली रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। Yes. कुछ तो होगा, मे बी देयर इज समथिंग, लेट मी बी ओपन माइंडेड, लेट्स सी। आई डोंट बिलीव इन दिस, आई हैव माय ओन डाउट्स, आई हैव माय कंफ्यूजन, डजंट मैटर, बट डोंट रिजेक्ट इट। सो Yes. वेदांत की जो फिलोसॉफी में ये इनकरेज किया जाता है कि यू सीक, यू मस्ट आस्क, यू मस्ट find the authentic source, and the source doesn't have to be a person or an individual. The source can be knowledge, and today knowledge बहुत easily available हो गया, बहुत authentic, लोगों ने बहुत कुछ इस पे काम किया है, हम उसको ले सकते हैं। सो हमें क्वेश्चंस पूछना है, एक्सप्लोर करना है, और खाली थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिस भी करना है। हम प्रैक्टिस नहीं करते। आजकल क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन इतना अवेलेबल है और इतना इजीली अवेलेबल है कि हम बहुत पढ़ लेते हैं, हम बहुत कुछ जान जाते हैं। वो वेदांत में क्या कहा, वेस्टर्न कल्चर में क्या कहा, क्रॉस कंट्रीज में क्या कहा गया, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं डालते हैं। तो यही हमारी प्रॉब्लम है Very true. आजकल जनरेशन के साथ में। मेरे साथ भी ये बहुत समय तक रहा, मैं बहुत पढ़ता था, और आजकल मैं देखता हूँ, मैं मेरी पढ़ाई और मेरी प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलना चाहिए। जहाँ गैप हुआ वहां पे प्रॉब्लम है। Yes. तो स्वामी तो जी, जैसे आपने बताया फिलोसफी के बारे में, तो आप इसको प्रैक्टिकल पार्ट के साथ कैसे लिंक करेंगे? जैसे आजकल लोग मेडिटेशन में काफी इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस फिलोसफी को हम मेडिटेशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? जो भी फिलोसफी है अभी, बहुत सारे फिलोसफीज है, मतलब हमारे नहीं, भारत we के जो can take an example of Vedanta that you were talking about तो earlier. वेदांत Vedanta. एक, हाँ, एक बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेदांत भी कहता है और भगवत गीता भी उसी में आता है, उपनिषद में आता है। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ऐसा बताते हैं उसको। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर radiant immortal atman, or you are the radiant immortal soul. You are not this limited entity. Yes. Body and mind are two instruments that you have to achieve whatever you want to achieve in life. Whatever you want to achieve in life. You want to be a doctor, engineer, millionaire, billionaire, a monk, or whatever. आप सिर्फ इस बॉडी और माइंड के थ्रू कर सकते हैं। Yes. तो True. ये कॉन्सेप्ट को हम, अब आपने जैसे कहा कि इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, Hmm. तो प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें बॉडी को समझना पड़ेगा और माइंड को समझना पड़ेगा, विच इज नॉट दैट बैड। बिकॉज अगर हम अपने बॉडी को ही नहीं समझेंगे, हम दुनिया को क्या समझेंगे? अगर हम अपने बॉडी को देखभाल नहीं करेंगे, तो हम हमारे गोल को कैसे अचीव करेंगे? उसी तरह से
बॉडी को तो सब देखभाल कर लेते हैं, काफी लोग कर लेते हैं, बहुत लोग वॉकिंग में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम में ज्वाइन करते हैं, घर में योगा प्रैक्टिस करते हैं, माइंड को सब भूल जाते हैं। एंड इन एवरेज अगर हम देखें, हम अगर बोले चलो इफ somebody is very regular in his exercises, एक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हम बॉडी के लिए देते हैं, माइंड के लिए कितना देते हैं? ऑलमोस्ट जीरो। वी टेक इट ग्रांटेड, माइंड को हम बहुत मतलब उसके विचार के बारे में हम सोचते ही नहीं है। Yes. दैट इज व्हाई मेंटल हेल्थ इज सो इग्नोर्ड इन आवर कंट्री, बिकॉज जबकि ऐसा नहीं था। हमारा कल्चर जो है, मतलब you will be astonished if you go deeper into the study of Vedanta. You will see that everything was about mental health, everything was about mind को समझने के ऊपर बेसिस है। तो जितने सारे मेडिटेशन के टेक्निक्स है, जितने सारे हमारे रिचुअल्स है, ये बॉडी और माइंड को समझने के लिए है। आप मुझे कोई भी एक रिचुअल बता दो, आप कोई भी बता दो आपके लाइफ से, एक छोटा सा, घर में आपको दादी ने कहा होगा, माँ ने कहा होगा, कोई एक चीज बता दिया होगा, अच्छा ऐसा मत करना बच्चे, या कोई मंदिर का कोई रिचुअल हो, या घर में पूजा का कोई भी एक रिचुअल बता दीजिए, मैं आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस बता दूंगा। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि कोई भी रिचुअल को, कोई नहीं, भी नहीं, थियरी को वी कैन कन्वर्ट इनटू प्रैक्टिकल हाँ, हाँ, मेडिटेशन। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफul. सो Swamiji, can we do any one practice? Any one, like नहीं, नहीं, whatever मैं the प्रैक्टिस philosophy? की बात नहीं कर रहा था। मैं क्या, अच्छा मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो मुझे अ, एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे पूछा, हम लोग सुबह सुबह जा रहे थे सत्संग में, मॉर्निंग टॉक में जा रहे थे, एंड सडनली ही स्टॉप्ड एंड ही आस्क्ड मी, आप नहाए हो? मैंने कहा हाँ स्वामी नहाए। हम सीढ़ी उतर रहे थे, 2 कदम के बाद में उन्होंने फिर पूछा कि आपने नहाया? तो मैं बोला हाँ स्वामी नहाया। बट तब क्या था ना, मैं मेरे गुरुजी के साथ मेरा इनिशियल रिलेशनशिप वाज मोर लाइक ए ग्रैंड फादर। तो उसमें उतना डर नहीं था, उतना श्रद्धा नहीं था। तो लोग तो उनको बहुत मानते हैं, गुजरात में बहुत लोग उनके भक्त है, उड़ीसा में लाखों लोग उनको गुरु मानते हैं। तो वो लोग तो बहुत, दे विल स्टैंड इन ऑ इन फ्रंट ऑफ हिम, और मैं बहुत कॉमन कन्वर्सेशन कर लेता था। आई वाज हार्डली 20 इयर्स ऑफ एज। तो मेरे मन में गुस्सा आया कि मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, लाइफ छोड़ के इनके पास में आ गया हूँ, 3 साल इनके पास रह गया हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दिन रात इनके साथ लगा हूँ, इनको मेरी बातों का भरोसा ही नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, अब मैं अच्छे घर से आया हूँ, मुझे अच्छी चीजें पता है। ऑफकोर्स मंदिर में जाने से पहले नहा के जाते हैं। तो मैं, अच्छा एक बार पूछा कोई बात नहीं, ये 2 बार क्यों पूछा? तो मेरे अंदर ना माइंड, मेरे ईगो को बहुत हर्ट हो गया और मैं बहुत गुस्सा हो गया। तो हम मॉर्निंग मेडिटेशन में गए और स्वामी जी ने पूरा 20 मिनट का टॉक दिया। मुझे कुछ, मैं सुना ही नहीं वो टॉक। सी हाउ पावरफुल इज द माइंड। जब आप गुस्सा हो जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता, हम सुनना भी बंद हो जाता है, देखना भी बंद हो जाता है, थिंकिंग बंद हो जाता है, बस एक इमोशन आ गया, एंगर, सब कुछ खत्म। Yes, yes. तो मैं 20 मिनट उनके सामने बैठा हूँ, वो 20 मिनट तक लेक्चर किया उन्होंने, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे मन में एक ही बात है, क्यों डांटा है, मतलब क्यों बोला ऐसा, 2 बार क्यों पूछा, क्या ही डजंट बिलीव मी? मतलब ऐसा कैसे मैं उनको झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ। आई वाज ब्रॉट अप टू टू बी ट्रूथफुल ऑलवेज। सो और वो मुझे दिन भर परेशान करता रहा वो विचार। आई वाज रियली रियली डिस्टर्ब द होल डे। फाइनली इन द आफ्टरनून आई कुड टेक इट एनीमोर। मैं उनके पास, ही वाज फ्री, आई वेंट अप टू हिम, आई सेड स्वामी जी मैं सुबह से परेशान हूँ, मुझे ये समझाइए कि आपने मुझे दोबारा क्यों पूछा? डू यू नॉट बिलीव मी और डू यू थिंक दैट आई एम टेलिंग यू लाई? उन्होंने, वो हंस, जैसे आपने हंसा वो भी हंस दिए। बोले अरे मुझे पता है कि आप नहाए हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आई नो दैट यू हैव टेकन ए बाथ, देन व्हाई डिड यू आस्क मी सेकंड टाइम? आई एम रियली डिस्टर्ब्ड।
अच्छा वो तो मैं कुछ और पूछ रहा था, आप तो कुछ और समझ लिए। मैं बोला बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप जब नहाने गए बाथरूम में, और हम लोग उस समय तो शावर होते नहीं थे, बकेट और मग होता था। तो उन्होंने बोला कि जब आपने पहला मग का पानी लिया और उसको सर पे डाला, when the first drop of water touched your head, at that time, what was the thought going on in your mind? And at that moment, where were you in your awareness? आप बाथरूम में थे कि आप कहीं इधर उधर आपका मन भटक रहा था? And I was looking at him with awe. मैं है ये कौन करता है? बाथरूम में जाके कोई इतना कौन सोचता है? You go to the bathroom, you pour water over yourself, put whatever you have to do, clean yourself, and just come out of it. उस समय में क्या थॉट चल रहा था, ये कौन सोचता है? तो मैंने बोला स्वामी जी, अभी इतने सालों में कभी ऐसा सोचा नहीं। नहाने बाथरूम जाते हैं, नहा के आ जाते हैं। See, this is what I was talking about. That means in all your lives till this moment, you have never had a proper bath. You have never had a aware bath. And आजकल माइंडफुलनेस टर्म ज्यादा फेमस हो गया। उस समय में तो हम लोगों को पता नहीं था ये टर्म क्या है। लोग आजकल बोलते हैं कि ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये हमारे वेदांत से ही आता है, बट वो अच्छा है जो लोगों ने उसको टर्मिनोलॉजी को इन्वेंट किया। आई गिव देम अ क्रेडिट बिकॉज वो बहुत पॉपुलर हो गया। इट्स अ वेरी कैची टर्म कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब इतने साल में तुमने ठीक से नहाया नहीं, तो कल से जब नहाने जाओ तो प्रॉपर नहा, यू बेटर हैव ए प्रॉपर बाथ। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी हमारा नहाना, वो भी मेडिटेशन हो जाता है हमारा, Yes, वो yes. भी माइंडफुलनेस हो Doing by जाता है, वो myself. भी अवेयरनेस हो जाता है, अगर हमें ये पता है तो, अगर हमें ये सही ढंग से समझाया जाए तो। किसी ने नहीं बताया था मुझे, Yes, हमें किसी ने नहीं completely बताया। true. सो Yes. हमारे स्वामी जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगी क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ा सा। कि जैसे सृष्टि ने एक क्वेश्चन पूछा है कि बट यंगर जनरेशन रन अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस, हाउ टू डायरेक्ट दैम? थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे बिकॉज द वॉइस गॉट कट लिटिल बिट। यस श्योर। तो सृष्टि ने एक क्वेश्चन पूछा है, बट द यंगर जनरेशन, जैसे कि आप बात कर रहे हो कि मेडिटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, but the younger generation runs away from the spirituality. So how we can handle that? Like how to direct सो them? हाँ, ये मैंने थोड़ा सा टच किया था कि Yes. 50 साल पहले ना इतना मेडिटेशन की जरूरत नहीं था नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल सोशल लाइफ में। इवन 20 साल पहले भी इतना जरूरत नहीं था, बिकॉज लाइफ वाज मच इजियर, मच सिंपलर, Yes. कंपटीशन वाज लेस, द इकोनॉमी वाज बेटर, और हमारे ऊपर Mental issues. टेक्नोलॉजी का प्रेशर नहीं था। आज 40,000 के नीचे अच्छी फोन नहीं आती, तो हर पीढ़ी को एक 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो Yes. यंगर जनरेशन को ज्यादा जरूरत है कि वो कैसे माइंडफुल हो और कैसे अवेयर हो, ताकि वो अपने लाइफ को ठीक से लीड कर पाए। The reason that people run away, younger generation run away from the spirituality is because religion uh, is not presented in a proper way. Spirituality is not presented in a proper way. हमारे मैं again I am let me clarify, I am not trying to blame anyone. ये सिचुएशन है, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। हमारे पेरेंट्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम सेल्फ एनालिसिस को, अपने आप को समझने के लिए जो जो एबिलिटी चाहिए उसको एनकरेज नहीं करते। जबकि पहले ऐसा था, बहुत पहले इसी पे सब कुछ सेल्फ एनालिसिस पे बेस होता था कि अपने आप को समझो, अपनी बॉडी को समझो, अपने माइंड को समझो। ओनली देन यू कैन go and achieve whatever you want to achieve. So आज का यंगर जनरेशन को क्या चाहिए, गोल क्या है? मैं अगर ये पूछूं, जिन्होंने सवाल पूछा, अगर मैं उनको ये पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में,
और अगर वो कहें कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं पोएट बनना, जो भी है, वो बनने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। आज के डेट में उसके बिना आपके पास चॉइस नहीं है। अब अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। सारा प्रॉब्लम यहीं पर है, सारा प्रॉब्लम यहीं पर है, क्योंकि घर में क्या कर दिया जाता है या आसपास में क्या करते हैं, हमको एक आइडिया दे दिया गया है कि ये स्पिरिचुअलिटी है। अब जब वो आइडिया मुझे दिया गया कि ये स्पिरिचुअलिटी है, और मेरे अंडरस्टैंडिंग से ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, हर एक पर्सन अलग है, हम सबको एक उसमें पैटर्न में नहीं डाल सकते। तो जब उसको उसके पैटर्न के हिसाब से, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जो भी है वो सही गलत हम नहीं जज करेंगे। उसको कहा गया कि कॉन्सेप्ट ए इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, एंड आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट ए। सो मुझे ये समझ में आ गया, मेरी ब्रेन वॉशिंग ये हो गई, स्पिरिचुअलिटी ये है और ये मेरे बस का नहीं है। सो आई स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट। सो आज की पीढ़ी के पास में, यंगर जनरेशन के पास में आज एक बेनिफिट है जो मेरे पास नहीं था। मेरे पास गूगल नहीं था, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था, मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था। आज हर नॉलेज सिस्टम अवेलेबल है। तो क्या हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लें कि लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज रिलीजन एक्चुअली, व्हाट इज द रूट ऑफ रिलीजन, कहाँ से शुरू हुआ ये स्पिरिचुअलिटी है क्या। ठीक है, someone is saying this is spirituality, another person is saying this is spirituality, another person is saying this is spirituality. I have a notification, just a second, I'm still here, okay, yeah. So अब हम ये सब जो हमारे सामने स्पिरिचुअलिटी की जो भी कॉन्सेप्ट्स आ गए 10 20 50, हम बिना रिजेक्ट नहीं करते। लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट रिजेक्ट एनीथिंग। कोई पसंद नहीं आया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके फॉलो करो, मैं वो भी नहीं कहता हूँ। आई नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग इन माई लाइफ विदाउट एक्सप्लोरिंग, विदाउट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसके पीछे रूट क्या है। इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें अपनी रिसर्च करना है, हमें इसके बारे में स्टडीज को ढूंढना है। अगर हम ये ले आए ना, ये रिसर्च हम नहीं करते, अगर करते हैं तो राइट सोर्सेस में नहीं करते। तो अगर ये हम करेंगे तो यूथ स्पिरिचुअलिटी से भागेगा नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से कोई भाग नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी इज ऑलरेडी विद इन यू। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर हम यूथ को फोर्स ना करें और हम उनको ही रिसर्च के लिए बोल दें कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढें, rather than forcing them to be a part of any spiritual group, I think that can be benefit more rather than forcing them. हाँ, ये यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है, कुछ फोर्स करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे लाइफ का। लाइक आई सेड, आई वांटेड टू आस्क, हर एक सवाल पूछना चाहता था कि नहीं, मैं इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे प्रूफ क्या है। जब तक मुझे इसका लॉजिक नहीं मिलता है, जब तक मुझे इसका प्रूफ नहीं मिलता, मैं इसको नहीं मानूंगा। हमेशा पूछता था। बट सर्टेन टाइम्स डोंट यू थिंक दैट क्वेश्चंस कैन बी ओवरबोर्ड। अब मैं अगर ये सवाल पूछूं कि भाई चिकन पहले आया कि अंडा पहले आया, सीड पहले आया कि ट्री पहले आया, तो ये कोई सवाल नहीं है। इसका कोई आंसर नहीं दे सकता ना, मैं नहीं दे पाऊंगा, कोई भी नहीं दे पाएगा, पता नहीं। जब पता चलेगा तो पता चलेगा। तो ऐसे कई बार क्या होता था कि हमारे क्वेश्चंस ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तो एक बार मैंने ऐसा, मुझे याद नहीं है, मैंने कोई एक ओवरबोर्ड क्वेश्चन पूछा मेरे गुरुजी से, ऐसे पूछा। तो वो थोड़े से, मतलब नाराज तो नहीं कहूंगा, थोड़े स्टर्न हो गए। बोले, यू ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, यू वांट प्रूफ फॉर एवरीथिंग, बट डू यू ऑलवेज डू दिस फॉर एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ? आई सेड यस, आई डू दिस। And do you think that you have done this all your life until now? I said yes, I have done it. अच्छा, तो जब तुम छोटे थे, जब तुम्हें, हाँ, उन्होंने पूछा कि अच्छा जब तुम छोटे थे तुमको अल्फाबेट ए किसने लिखा है, किसने सिखाया?
Who taught you how to write A? I said, as far as I can remember, I think my father taught me. तो कैसे सिखाएगा? तो इतना तो डिटेल में याद नहीं है, पर ये याद है कि वो ऐसा एक स्लेट होता था और चौक पकड़ के, हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे ऐसा अक्षराभ्यास किया था। पहले उड़िया सिखाया, फिर हिंदी सिखाया, फिर संस्कृत सिखाया, फिर एक अक्षर इंग्लिश का भी सिखाया। तो बोले उस दिन क्यों नहीं पूछा, पिताजी, डैड आई डोंट बिलीव यू, यू प्रूव इट टू मी that A is written with 3 sticks, not 4 sticks. Unless you teach me, unless you prove it to me, logically, analytically, scientifically, I will not learn how to write A. तो मुझे स्वामी जी ने ये पूछा कि did you ask this question at that day? I said no. Then what did you do? I said I just did whatever he said. हाथ पकड़ के जैसा सिखाया वैसे सिखाया. So do you have any doubt today that your dad taught you the right way of writing A? It is with 3 sticks, not 4 sticks. So I was like, I was confused that where is this conversation going? He said, of course, he taught me right. He said, now the same situation, bring to your present day life. अब आपके सामने कोई सिचुएशन आया, मेरे सामने आया, मंदिर में घंटा पीटते, मेरे को नहीं ठीक नहीं समझना, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर। ये हमारा फिलोसफी कहता है कि doubt is fine, confusion is fine, if you don't believe also is fine. Don't reject. Yes. Just don't reject. Don't be judgmental. हाँ, तो देखो कोई भी मतलब जितना मैंने स्टडी किया है, थोड़ा बहुत स्टडी मतलब रिसर्च किया है, इतना ओपन माइंडेडनेस वेदांत जैसा है वो कहीं पर नहीं है। वो ये नहीं बोलता है कि वो आपको जज नहीं करता है कि आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो। वेदांत में तो भगवान के बारे में बात भी नहीं करते। तो हमें बहुत ये जरूरी है कि हमारी इंक्वायरी जो है बहुत अनबायस्ड होना चाहिए, बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए, और हम रिजेक्ट नहीं करते। We are closing our learning portals. अब मैं एक बहुत छोटा सा पौधा लगाया गमले में, उसको घर पे लाके उसके ऊपर बाल्टी ढक दूंगा तो क्या होगा? So rejection is like a cover over our consciousness or over the evolution of our consciousness. Yes. तो ये मैं चाहूंगा कि एक्सप्रेस करूंगा कि यंगर जनरेशन को कि भागे मत स्पिरिचुअलिटी से और रिलीजन से, बिकॉज हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर कर सकते हैं, स्पेशली इन आवर कंट्री। आई डोंट वांट टू मेक इट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हमारा कंट्री में आज रिलीजन पे कोई बात नहीं करता है, बिकॉज हमें लगता है रिलीजन इज ए बैड वर्ड, बिकॉज रिलीजन के नाम में बहुत कुछ हो गया। हम सब हर्ट हुए हैं, हर रिलीजियस ग्रुप का आदमी हर्ट हुआ है। हिंदूज हैव बीन हर्ट, मुस्लिम्स हैव बीन हर्ट, क्रिश्चियंस हैव बीन हर्ट, बुद्धिस्ट हैव, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। यस सर। तो जैसे यस सर, कंटिन्यू। तो ये भी बहुत जरूरी है हम ये समझने के लिए कि आज हम ये जो टर्म यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी, हम मजबूर हैं इसको यूज करने के लिए। मैं भी यूज करता हूँ, आपने भी यूज किया है, लाखों लोग यूज करते हैं, बट ये ठीक है, सोशली यूज करने के लिए ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में कोई फर्क नहीं है। एज लॉन्ग एज यू नो द ओरिजिनल रिलीजन। ये जो आज चल रहा है रिलीजन के नाम पे जो चल रहा है उसमें गड़बड़ है। Yes, I think sir we are little bit I think we are crossing our limit, and I'm sure we have to do meditation also. Sorry to interrupt, sir. No, but, please. Yeah, yes. Because you told me that I have to. Yeah, just to quickly sum up this, that religion was spiritual. Religion spiritually था। तो ये स्टडी हमको करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात पे मान लो, या कोई बोल रहा है मान लो, या कोई किताब में मान लो, नहीं। आप कोई भी चीज को मानने से पहले अपना रिसर्च करो, ऑथेंटिक सोर्सेस में जाओ और उसको समझो, तब आपको नहीं लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी से आपको भागना है
या हम ये सवाल भी नहीं आएगा कि why youth is running away from spirituality. Youth is only running away because the presentation is not right. If the youth finds out, then they will follow it. तो हमें हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी क्या है, ओरिजिनल रिलीजन क्या है. यस सर, आई एम श्योर सृष्टि आपको अपना आंसर मिल गया होगा, और बहुत आपके आंसर से बहुत सारे यूथ भी मोटिवेट होंगे कि कैसे हम खुद का रिसर्च करके कैसे हम स्पिरिचुअलिटी से भागे ना और उसको हम फॉलो करें और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएं. तो जैसे कि ये यूथ की बात हो रही थी, तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है. तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर योर व्यूज ऑन द मेंटल हेल्थ. मतलब व्हाई आर पीपल इन टुडेज जनरेशन सफरिंग मोर एंड मोर फ्रॉम मेंटल इशू. बिकॉज बाहर के प्रेशर बढ़ गया हमारे ऊपर, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए. मतलब कट ऑफ मार्क्स 98.5 हो गया. मतलब कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक. एवरेज स्टूडेंट कहाँ जाएगा? ऑब्वियस है, नेचुरल. तो और बहुत सारे सिचुएशन बढ़ गया है, स्पेशली लॉकडाउन में बढ़ गया है. मैंने ये लोन ले लिया है, मेरा ईएमआई महीने का 60,000 रुपए है, सैलरी नहीं आ रहा है, तो टेंशन तो होगा. According to you, तो what is the main cause? What is the main cause of this mental issue? बिकॉज बिकॉज हम माइंड को ही नहीं समझते. देर इज नो स्टडी ऑफ द माइंड. देर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड इन आवर डेली लाइफ. हम अगर माइंड को नहीं समझेंगे, हम मेंटली डिस्टर्ब होएंगे, यू मी एवरीबॉडी ऑल टुगेदर. बिकॉज आवर एजुकेशन इज नॉट इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ. हमारे स्कूल में मेंटल हेल्थ नहीं पढ़ाया जाता है. माइंड क्या है बताते नहीं है. आधे लोगों को पता भी नहीं माइंड है क्या. हमको लगता है मैं और मेरा माइंड हम एक ही एंटिटी है. अगर हम वेदांतिक स्टडी पे जाएंगे, रिसर्च पे जाएंगे, यू विल बी 100% श्योर दैट यू हैव ए सेपरेट पावरफुल एंटिटी देन द माइंड. अब ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा बहुत सारे लोगों को, बट यही सच है और ये एस्टेब्लिश हो गया है साइंटिफिकली. क्वांटम फिजिक्स सारे टर्मिनोलॉजी ने इसको एस्टेब्लिश कर दिया है. तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि मेंटल हेल्थ को हमारे डेली लाइफ में ले आना है. अगर हम माइंड के ऊपर 10 मिनट सिर्फ अपने माइंड, अरे आई वांट टू डू दिस, सो आई नीड माय माइंड टू बी हेल्दी, सो आई मस्ट टेक केयर ऑफ माय माइंड, ये एटीट्यूड हमें लाना पड़ेगा. विदाउट इट वी विल ऑल go crazy. We'll all have mental issues. वो मेंटल इश्यूज का समझ लोगों को नहीं आता. लोगों को सिर्फ लगता है कि यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम हो गया तो ही मेंटल इश्यूज होता नहीं. हमारे फ्रस्ट्रेशन, हमारा डिप्रेशन, हमारे फेलियर्स कैन ऑल्सो बी कॉज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स. और मेंटल प्रॉब्लम्स को एक्सेप्टेंस भी नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि हम माइंड के बारे में समझते नहीं है, तो हम जो सोशली जो एस्टेब्लिश है, अरे इसका वो देसी भाषा में बोलते हैं इसका तो खिसक गया है, हम डिप्रेस हो जाते थे. सो मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. आई कांट. Yeah. Am I audible? Hello? Hello? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? 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 Am I audible? Let me check if I can do something. हेलो?
Hello. Swamiji, am I audible? Swamiji, I can't hear you. Yeah, yes. You can rejoin. Hello. Can you hear me now? Hello. Yes. Hello. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay. Sorry about that. I don't know. Maybe the internet just dropped for a minute. So sorry about that. So I was asking that what would you suggest for the people who are suffering from mental health issues? What is your views? Visit a mental health practitioner. Uh, First of all, we must know that we are having some mental issues. We must accept that yes, I must take help because it doesn't matter. It's really not that wrong. You could nowadays you could hide it from your family or friends. It doesn't matter. But mental health को ignore नहीं करना चाहिए. We must take help, and eventually we can also bring in some practice of awareness and meditation and breathing to improve our mental conditions. There are a lot of ways, especially in yoga, in pranayama, in meditation, which really works on your mental conditions. Depression के लिए है, काफी सारा चीजें हैं, and plus people like you for counseling. If there's no harm in talking to someone, and I think the mental health profession is very particular about keeping things secret and not discussing patients information with others. So I would encourage everyone not to shy away from taking help, and but that is not enough. We must also bring in some personal discipline about mental health, study, understand, practice to improve our mental well-being. It's very important, very important. Yeah. Yes. Yeah, So now thank I you so can. much. Yeah. So thank you so much for your insight. So can we do practical? That you mentioned that we are also going to do meditation, right? Yes, yes. So I would be happy to do a small guided meditation. So before we do that, I would like everyone to wherever they're sitting on the chair or wherever, I would like you to sit straight, like keep your spine straight, and chin parallel to the ground, and eyes softly closed, because you're going to only hear my instructions, so you don't need to look into the camera as long as you can hear my voice. I mean, there is no harm. You can, if you want to open your eyes, you can open your eyes, but the practice will be more impactful if we close our eyes, and I will do a small healing meditation. And so how much time do we have for the meditation?
Yeah, so we can do 15 minutes. 15 minutes is good. Yes. Okay. Yeah, yeah, no problem. Yeah. Okay, so please, close your eyes very softly, Yes. and if you are sitting on the chair, make sure that your feet is on the ground, flat on the ground, and knees parallel to the ground. Sorry, knees parallel to each other. So Inhale shall I deeply. switch off my camera? Would that be okay? So that I Uh, can also you enjoy can. the Yes, meditation yes, you can. practice. No problem. Yeah, no problem. Yeah. No problem. Okay. Thank you. So inhale deeply, exhale completely. I'm also switching off my camera for some time so that the internet doesn't create any problem. Uh, Inhale deeply and exhale completely. Take few deep breaths. Relax your whole body. Let there be no tension, and affirm inwardly. Tell yourself that each time you inhale and each time you exhale, feel that any thoughts, any care, any worries, any tension is just going away from your body and mind, and you are feeling increased relaxation each time you exhale. Develop this kind of an awareness that each time you exhale any thoughts, any worries, any tension, and tell yourself that at this moment I am assigning this next 15 minutes for this practice of meditation. And all the thoughts and all the other things will receive attention from you after this meditation. So visualize that you have entered a condition of relaxation. We must learn also we must try to hold the body with no movement at all, either forward or backward or sideways. Hold it steady with no movement except your breathing. Not only you hold the body without any movement, but you also learn to become intensely aware that the body is not making any movement. Keep the body without any movement and then become extremely conscious or extremely aware that the body is not moving at all. Now, when you are thus conscious that your body is steady, try to watch your own mind. Do not try to check the mind. Do not try to stop any thoughts that may be coming. Allow the mind to wander freely to any thought. Let it go wherever it wants to go. Now, again, bring back your awareness. Try to become aware of your body, which is not making any movement. And once again, try to become aware of any thoughts that the mind may be entertaining at this moment. Now, bring back your awareness towards your breathing and visualize through your awareness that you are surrounded by a vast ocean of peace, light, and energy. Do this through your mental awareness. Visualize yourself
that you are surrounded by a vast ocean of peace, light, and energy. Everywhere, all around you, energy, peace, and a diffused light pervades as far as your mental vision can reach. And this ocean is extending in all directions. Visualize that you are just floating like a weightless feather in this ocean of energy, peace, and light. You are as if a drop in this ocean, without the body, without the name, without the form. A pure center of consciousness. Feel yourself as part and parcel of this ocean of peace, light, and energy. With this awareness, inhale deeply, exhale completely. Now, with each incoming breath, feel that the peace, the energy, and the light from this ocean is entering into your nostrils, going up to the head, permeating the brain, the entire central nervous system, flowing down your head, down to the spinal column, and through the spinal column into every portion of the body. Each time you inhale, feel that the peace, energy, and light from this ocean is entering into your nostrils and reaching every portion of your body. All the extremities of all the limbs, all the inner mechanisms are saturated and interpenetrated by this energy, light, and peace. Visualize that every little cell, every atom of your body, all the millions and millions of cells are completely saturated in peace, energy, and light. Visualize that your entire being is saturated in absolute peace with new light and new energy. Feel that this peace, this energy, this light is coursing through the entire bloodstream, reaching every nook and corner and vibrating every nerve fiber and filling every cell with new life, abundant energy, fresh vigor, and health. Inhale and exhale with this awareness.
Now when you exhale, visualize that effortlessly all the thoughts and cares and worries and all the tensions are dissolving into this ocean of light and peace and energy which is surrounding you. And as you inhale, imagine or visualize that a bubble of energy is beginning to fill you from within. And as you exhale, imagine this bubble expanding and opening, expanding out into the ocean. With each breath, allow yourself to be filled with shining and radiant energy and light and peace from this ocean. Let everything open to this new light, new energy and peace. Opening and expanding with each breath. Now visualize or imagine that as you inhale and exhale, your drop of energy is expanding outwards. That the ocean of peace and light and energy is converging and pouring into you warmth and love. Your little self is opening outwards and dissolving into this vast ocean of energy and light and peace. Allow all your limitations and pains and thoughts and cares to dissolve into this free flowing ocean. Expansion and convergence happening simultaneously. As you exhale, allow the feelings of pain, any pain, physical, mental, any pain, to open out and dissolve into this free flowing ocean. And as the energy and the vibration of the pain expands, visualize or imagine or feel that healing waves are pouring into you. Wherever you are feeling pain, allow this feeling to expand and simultaneously allow a deep sense of healing, soothing energy to flow into you and fill you with a sense of well-being. Inhale and exhale with this awareness. Allow yourself to receive from the universe whatever it is that you need the most at this time. Let everything within you open up into harmony. Visualize that with each inhalation, now you are filling yourself with warmth and courage and strength. And whatever you need to enable you to let go of tension, to let go of fear, breathing and receiving, breathing and receiving. Whatever you need
let go of fear, release all limitations, allowing total healing to take place. Now visualize that you are filled with peace, strength, and security. You are filled with abundant energy. You are filled with new light, and you feel with peace and appreciation for yourself and for the world that you live in. Now, whenever you feel like, very, very slowly open your eyes. Practice is over. Thank you. Thank you so much. Thank you. After No problem. meditation, yes, yes, you were saying something. Uh, So, is it there was a any? really, Yes, yes. Please go ahead. yeah, it was a really powerful meditation, I can say. एक भी मिनट ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मन कहीं भटका, तब Very good. काफ़ी रिलैक्स्ड फील हुआ और आई थिंक इट्स वेरी इजी ऑल्सो. हमें अगर हम डेली बेसिस पे अगर इसको प्रैक्टिस करें तो आई थिंक वी कैन सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ. Absolutely, there is no doubt about it. And also, it's very also important that you see, my Guruji put it very critically that meditation starts with M, and M also is mind. So if we do not understand the mind, we cannot do meditation. I mean, we cannot practice Yes. meditation. So there is a very there is a very wonderful book. I think everyone should read. It's not a novel type of read; it's a textbook kind of a read. It's called "Mind: Its Mysteries and Control," and the author is Swami Chidananda. It is if you look it up online, it's available to download for free, Sure. and Sure. it's very very interesting. It will give you many good ideas about what is the mind, what is its nature, and how do we deal with the mind. So I would suggest all those who want to understand the mind more, they should read this book. And just type it out in the chat box so you could give it to everybody. Mind is Mysteries and Control by Swami Shivananda. Yes. Thank you. And Thank you so much. it will be really good. सो टू समराइज द होल सेशन, जैसे कि हमने अगर हम इसको समराइज करें तो अगर हम देखेंगे तो माइंड को जानना बहुत ही ज़रूरी है. और जैसे कि आपने बताया कि आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज इसलिए है क्योंकि हम माइंड को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में. तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दोनों साथ में काम करके काफ़ी मेजर शिफ्ट ला सकते हैं सोसाइटी में. Of course. Very good. Yes. So, as we come at the end of our today's episode, and thank you everyone. You will have been such a great audience, and thank you, sir, for your valuable time and your inputs. Thank you so much for your Thank wisdom. you for the opportunity, and I wish you all the best. And in about I think around after 2 hours, every Sunday I do this session that you have joined. If anyone wants to have a
those who were asking that how do we bring in the spirituality to the practice. If anybody is interested, Yeah. they're most welcome to join. And maybe you could share the information if they are interested, they can join. So Sure, sure, sure. So we will we follow can my share. Facebook. Yeah. So if anyone is interested, most welcome. Yes, yes. Thank you. Awesome. Thank you. Sure. Namaste. Thank you Namaste, so much. everyone. Take Namaste. We care. had a lovely time. Thank you. So we had a lovely time, and I'm going to see you all the next week on Sunday. And the episode is about philosophy of Chinmaya mission. So thank you so much. Stay tuned.